Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. If you are watching my video for first time, I request you to please subscribe our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notification. Friends, today we are going to learn for CA Inter course accountancy subject investment account question number 10, which is now on your screen. Let's see the question. Let's read the question. A Limited purchased 5,000 equity shares, nominal value rupees 100 each, of Alliance Limited for rupees 105 each on 1st of April 2000 X1. Shares were quoted, कम डिविडेंड. स्टूडेंट, ये लाइन का मीनिंग ये होता है कि ये शेयर्स हम लोगों ने खरीदा उस टाइम पे ऑलरेडी डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका था और जो भी मार्केट में प्राइस है वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडिंग डिविडेंड रहेगा, बिकॉज जो अभी का प्रेजेंट होल्डर है, प्रेजेंट शेयर होल्डर जो है, ही वाज एलिजिबल फॉर द डिविडेंड, बट सिंस ही इज सेलिंग द शेयर्स वी आर नाउ एलिजिबल फॉर डिविडेंड. तो बट ऑब्वियसली जो भी आपका प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड है. नाउ सर, व्हाट विल इट मैटर आवर अकाउंटेंसी? नो, इट विल नॉट अफेक्ट आवर अकाउंटेंसी. अपने अकाउंटेंसी में कुछ फर्क नहीं आएगा ये वर्ड का, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि दे मस्ट हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द डिविडेंड एंड डिविडेंड इज येट टू बी रिसीव्ड. Okay, so since we are purchasing the shares, we are eligible for dividend. But earlier owner, जिसके पास से हम लोगों ने खरीदा है, he is the original person who should receive the dividend. तो in short ये जो 105 है, इसके अंदर डिविडेंड का भी पैसा हम लोगों ने इसको देख के रखा है. तो जब ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो डिविडेंड जो है वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट बन जाएगा. That we will see. On 15th May 2000 X1, Alliance Limited declared and paid डिविडेंड ऑफ 2% फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2000 X1. ये देखो, ये डिविडेंड है, बराबर है. तो जब हम लोगों ने खरीदा था वो कम डिविडेंड मार्केट में प्राइस चल रहा था, और ये जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो कौन से ईयर के लिए मिल रहा है? 31st March X1. मतलब ये उस पीरियड का डिविडेंड है जो पीरियड में हम लोग ओनर भी नहीं थे शेयर्स के. तो ऑब्वियसली ये जो डिविडेंड आपको मिलेगा इट विल बी क्रेडिटेड इन कॉस्ट कॉलम. आपका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है. तो इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. Let's go with the next information. On 30th June X1, Alliance Limited issued a bonus shares. उन्होंने क्या इश्यू किया सर? बोनस इश्यू किया इन द रेशियो ऑफ 1:5. अच्छा सर, इसके अंदर से शेयर्स हेल्ड कितना है, बोनस कितना है? अगर कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका बड़ा वाला डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, ये बड़ा वाला डिजिट है वो आपका शेयर हेल्ड है, और एक होगा बोनस. मतलब बोनस का रेशियो होगा 1 शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड. तो अकॉर्डिंगली वी विल वर्क आउट. On 1st October 2000 X1, Alliance Limited issued right shares. तो 1 अक्टूबर में Alliance Limited ने राइट शेयर्स भी ऑफर कर दिया. अच्छा सर, व्हाट इज राइट शेयर्स? राइट शेयर मतलब कंपनी अपने को अधिकार देती है, अगर आपको चाहिए तो एडिशनल शेयर्स खरीद लो. वो शेयर्स खरीदने का नहीं खरीदने का वो अपना कॉल होता है, ठीक है. तो उन्होंने राइट इश्यू डिक्लेयर कर दिया है इन द रेशियो 1:12. वंस अगेन सेम अंडरस्टैंडिंग. एक शेयर का राइट मिलेगा अगर आपके पास कितने शेयर्स है स्टूडेंट्स? 12 शेयर्स है, ठीक है. एट ₹45 पर शेयर, A Limited subscribed to half of the right issue and the balance was sold at ₹5 per right entitlement. अच्छा, ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा that will be credited to profit and loss for right renouncement, ठीक है, as per AS 13 what we have seen earlier. Company declared interim dividend of 1% on 30th November 2000 X1. तो ये डेट में उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया. याद रखना, इंटरिम डिविडेंड ये बोनस इश्यू के ऊपर नहीं होगा और ये राइट इश्यू के ऊपर भी नहीं होगा. इसका रीजन ये है कि ये शेयर अभी अभी जन्म लिया है, दीज आर न्यू फॉर द कंपनी. तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अज्यूम ही करेंगे कि ये शेयर्स के ऊपर अपने को कोई भी इंटरिम डिविडेंड नहीं मिलेगा. दूसरी बात अपने को ध्यान में देनी है कि ये जो इंटरिम डिविडेंड है हम लोग बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू इनकम मानेंगे, मींस इट विल बी एंटर्ड इन द डिविडेंड कॉलम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है. राइट शेयर्स वे आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड. देखो अभी क्वेश्चन में लिख के दिया है कि राइट शेयर्स में डिविडेंड नहीं मिलेगा. कंपनी सोल्ड 3000 शेयर्स ऑन 31st December 2000 X1 एट ₹95 पर शेयर. तो 31st of December में हम लोगों ने 3000 शेयर बेच दिए, ठीक है. द कंपनी A Limited incurred 2% as a brokerage
while buying and selling the shares, तो जब आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो आपको क्या ब्रोकरेज इनकर करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स? 2% ब्रोकरेज भी आपको इनकर करना पड़ रहा है। जब आप बाइंग करते हो तो ब्रोकरेज विल बी एडेड टू द कॉस्ट, जब आप सेल करते हो तो ब्रोकरेज विल बी रिड्यूस फ्रॉम द सेल प्राइस, बिकॉज अपने लिए तो नेट सेल प्राइस ही मिलने वाला है। You are required to prepare investment account in the books of A Limited for the year ended 31st of March 2000X2। तो ये पीरियड के लिए आपको क्या बनाने का? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अलायंस लिमिटेड अकाउंट, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर राइट नाउ। ठीक है, हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। Students, come to the question now. A Limited purchased 5,000 equity shares, nominal value of 100 each, of Alliance Limited for rupees 105 each on 1st April 2000X1। क्वेश्चन के एंड में आपको ये भी दिया है कि आपको ब्रोकरेज इनकर करना है 2%। ठीक है, तो हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे इसके लिए। What is the cost of the investment? 5,000 shares into 105 each. To that I need to add brokerage. So total cost of investment comes to 535,500। ठीक है, that is 525,000 प्लस 10,500 विच इज अ ब्रोकरेज। तो अपना एग्रीगेट कॉस्ट हो जाएगा 535,500। ऑन डेबिट साइड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल एंटर टू बैंक अकाउंट एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। हाउ मेनी शेयर्स वी हैव परचेस्ड? 5,000। and how much cost do we have incurred? 535,500। this we have recorded। The shares were quoted cum dividend on 15th May 2000X1। Alliance Limited declared and paid dividend of 2% for the year ended 31st of March 2000X1। So we will get the dividend, working note number 2। Dividend for the year ended 31st March 2000X1, it was received on 15th May 2000X1। It is at the rate of 2% of the shares face value। Presently we are holding 5,000 shares, so I can say 5,000 shares जिसका face value है 100 rupees, so rupees 100 at 2%, at 2% I will get, so it is 10,000। इंपॉर्टेंटली ये डिविडेंड हम लोग को लास्ट ईयर के लिए मिल रहा है और शेयर्स हम लोगों ने करंट ईयर में खरीदे हैं। चेक करो, वी परचेज द शेयर्स ऑन दिस डे बट वी आर रिसीविंग डिविडेंड फॉर द पीरियड प्रायर टू दिस डे। मींस कैन आई से इट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड? इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज इट इज क्रेडिटेड इन द कॉस्ट कॉलम। यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 के हिसाब से ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम लोगों ने क्रेडिट किया कॉस्ट कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग फॉर, ऑन 38 जून 2000X1 अलायंस लिमिटेड इशूड अ बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:5। तो हम लोग को बोनस इश्यू मिलेगा, बोनस शेयर्स मिलेंगे जिसका कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास बढ़ेंगे। विल वर्क आउट दैट, वर्किंग नोट नंबर 3। bonus is in the ratio 1:5।
मतलब 5 शेयर्स होंगे तो एक बोनस मिलेगा, तो वी हैव टू राइट लाइक दिस, शेयर्स हेल्ड एंड बोनस शेयर्स। शेयर्स हेल्ड अगर आपके पास 5 होंगे तो एक बोनस मिलेगा। एज ऑन द डेट दैट इज एज ऑन 30 जून 2001 वी आर होल्डिंग ओरिजिनल जो 5000 शेयर्स है वो, तो बोनस कितना? हम लोग को बोनस शेयर्स मिलेंगे 1000 जिसका कॉस्ट कुछ भी नहीं पे होगा, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में एंटर होगा। ऑन डेबिट साइड विल रिकॉर्ड will get 1000 shares. On 1st October 2001, Alliance Limited issued a right shares in the ratio of 1:12. 1:12 के रेट में आपको राइट शेयर्स ऑफर किए गए, उसका रेट क्या था? 45 रुपीज पर शेयर। ठीक है। A Limited subscribed half of the right issue and the balance was sold at ₹5 per right entitlement. तो इसका भी एक वर्किंग नोट बनाया जाएगा राइट इश्यू का ऑन 1st October 2001। 1st October X1। क्वेश्चन है गिवन यू रेशियो ऑफ 12:1 दैट इज 12 शेयर्स होंगे तो आपको एक राइट शेयर लेने का मौका मिलेगा। और अगर हम लोग आज की तारीख में दैट इज ऑन 1st October 2001 में देखेंगे तो हमारे पास कितने शेयर थे वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो कहने से एज ऑन टुडे आई एम हैविंग 6000 शेयर्स। 1st October X1 में मेरे पास इतने शेयर्स है, तो राइट कितने शेयर्स का मुझे मिलेगा? इज दैट 500 शेयर्स? ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि हाफ ऑफ द राइट एंटाइटलमेंट हम लोगों ने खरीदा है। Half right shares were purchased, half right shares were sold. Half means we have purchased 250 shares at rupees 45 each. याद रखना जब आप राइट शेयर्स खरीदोगे इसके ऊपर कोई ब्रोकरेज नहीं आता है, जो भी है वो राइट कितना सेल किया आपने। क्वेश्चन ने आपको दिया है कि आपने हाफ ऑफ द राइट सेल किया है एट ₹5 पर शेयर। ठीक है, तो 250 शेयर्स। This amount what we receive will be credited to P&L account as per AS 13 as you know, and this is your investment purchased. Investment account debit to bank, right? So it will be recorded in your investment account as an investment purchased. ठीक है स्टूडेंट, so we are ready with this। आगे Company declared interim dividend of 1% on 30th November 2001. Right shares are not entitled for dividend. पहली बात तो राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स इसी ईयर में इशू है, तो लॉजिकली इसके ऊपर डिविडेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है राइट शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं है, तो आई कैन अज्यूम दैट के बोनस शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो वी आर डूइंग वर्किंग नोट फॉर रिसीविंग द इंटरिम डिविडेंड। क्लियरली क्वेश्चन ने बोला है कि आपको राइट शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट कि बोनस विल बी रिसीव्ड इवन ऑन बोनस। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोनस के ऊपर भी डिविडेंड नहीं देने की बात करते हैं, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि एज ऑन डेट कितने शेयर्स है उस सबके ऊपर डिविडेंड मिलेगा एक्सेप्ट राइट शेयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंटली वी आर होल्डिंग अदर देन राइट शेयर्स वी आर होल्डिंग 6000 शेयर्स, सो वी विल गेट द इंटरिम डिविडेंड ऑन these 6000 shares, and interim dividend will be definitely assumed as your revenue income which will be credited in the dividend column.
Here I have written one note. As per the given instruction, right shares are not entitled for interim dividend. Hence, interim dividend will be received on 6,000 shares only, which we are holding. So we will calculate 6,000 shares, जिसका face value है 100 at the rate of 1%. So can't I say my interim dividend will be rupees 6,000? It will be created in the dividend column. मेरा एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, तो मेरे डिविडेंड कॉलम में यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा. So this dividend we have created in the dividend column, which will be ultimately transferred to profit and loss. Right shares were not entitled for dividend, that we have already done. Company sold 3,000 shares on 31st December X1 at rupees 95 per share. ठीक है, तो शेयर्स आर सोल्ड एट 95. ऑब्वियसली 2% ब्रोकरेज आपको माइनस करना है. What is our gross sale price? They are saying 95 rupees. सो स्टूडेंट, अपना ग्रॉस सेल प्राइस जो है वो है 3,000 इंटू 95, विच इज 2,85,000. लेस ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2% इज 5,700. दैट गिव मी अ नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 279,300. जब मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो मेरा एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट. तो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, जब भी सेल होगा तो एक और ट्रांजैक्शन आएगा प्रॉफिट या लॉस का, दैट वी विल वर्कआउट कि इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है. सो विल हैव अ वर्किंग नोट, वन मोर वर्किंग नोट नंबर 7, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. प्रॉफिट और लॉस विल बी कैलकुलेटेड इन 3 स्टेप्स. पहले हम लोग देखेंगे अपना नेट सेलिंग प्राइस क्या था, फिर हम लोग देखेंगे हमारा एवरेज कॉस्ट क्या था, फिर उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे प्रॉफिट या लॉस हम लोग को कितना होगा. तो वी आर राइटिंग दैट selling price of 3,000 shares, I can call it as a sale proceed, 279,300. ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. फिर मुझे देखना पड़ेगा इसका एवरेज कॉस्ट ऑफ 3,000 शेयर्स. कैसे कैलकुलेट होगा सर? सिंपल है, कॉस्ट कॉलम को आप नेट करो, डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपके, वो मल्टीप्लाई बाय 3,000 शेयर्स व्हाट वी आर गोइंग टू सेल. लेट अस गो अहेड विथ, ये डेबिट कॉस्ट है और ये 10,000 माइनस होगा, ये तो अपना करंट ट्रांजैक्शन है. ठीक है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेबिट माइनस क्रेडिट नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू पर शेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3,000 शेयर्स सोल्ड. तो विल वर्कआउट $10,000 जो क्रेडिट में हम लोगों ने लिखा था वो अपॉन number of shares with us debit minus credit. This calculation will give me per share average cost, that is cost upon number of shares multiplied by, अच्छा इसमें से कोई क्रेडिट में माइनस करने के लिए था नहीं तो इसके लिए नील. हाँ, multiplied by how many shares we have sold students, 3,000. तो accordingly I will get the average cost. यू कैन चेक स्टूडेंट्स, अपना सेलिंग प्राइस है 279,300, जबकि अपना कॉस्ट कितना था 257,640. सो वी आर एट अ प्रॉफिट. कैसे प्रॉफिट निकलेगा?
So this is your profit, students, and this profit, our entry will be investment account debit to profit and loss account, that is cost column will be debited for this. In this way I have recorded the profit in the cost column on debit side. तो मेरा entry बन जाएगा investment account debit to profit and loss account. What next they have given you? They have not given you anything further. ठीक है, हम लोग तो अभी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे. वैल्यूएशन के लिए मार्केट प्राइस दिया हुआ नहीं है, अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया तो विल वैल्यू इट एट अ कॉस्ट. ठीक है, तो हम लोग सिंपली अकाउंट क्लोज कर रहे हैं. So student, you can notice in number of shares and in cost column we are having debit side here, that is the closing balance of the investment. बाय बैलेंस का रेट डाउन ऑन 31st मार्च x2, ये आपका इन्वेस्टमेंट का नंबर ऑफ शेयर्स है और ये उसका कॉस्ट है. अच्छा, कॉस्ट पे क्यों वैल्यू किया? बिकॉज मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं था कंपैरिजन के लिए. डिविडेंड फॉर द ईयर विल बी ट्रांसफर टू P&L. तो डिविडेंड वी आर ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन दिस वे दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन कम्स टू एन एंड. आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. कोई डाउट रहेगा, एक बार ये सॉल्यूशन वापस देख लो, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा. देन टू इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एट अर्लियर. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग. Before I close the video, please subscribe to our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notification. God bless you all.